Dear students, today you will learn how to write a good invitation. First of all, you try to know there are two kinds of invitations. The first one is formal invitations and the second informal invitations. Now take the first one, formal invitations. What is the meaning of formal? Formal means official. The invitation which you write to invite officials, very important persons, distinguished guests, dignitaries, etc., is known as formal invitation. The second one is informal invitation. Informal means unofficial. The invitation which you write and send to your friends, relatives, and the persons with whom you are familiar, very much familiar, is known as informal invitation. I have written some important points or important tips telling you how these two kinds of invitations should be written. First, I will take the important tips to write a good formal invitation. Try to understand them properly, attentively, so that you could be able to write a good invitation. The first point is, always think over the important and relevant points or details to be included in the invitation. Try to understand the nature of the invitation you are going to write. Then, according to the nature of that invitation, think in your mind what kinds of details are important, and those important details or relevant details should be included. The second point is, do not write in the form of a paragraph. If you write in running language, like a paragraph, that will not be an invitation at all. It will look very bad. It will make no sense. Now come to the next point. Each important detail in it should be highlighted separately. Important point. Each important detail, each relevant point should be highlighted separately. Placing of sentences, placing of details is very important. You have to maintain, you have to give some kind of symmetry to those details. How beautifully, how impressively you present it, that matters a lot. Now come to the second point, means another point, that is, mention venue, date, time, and the name of the distinguished guest, if any. These three things, the fourth one is the name of the distinguished guest. These details are very important. And they should be mentioned in order. Always remember this. Now come to the next point. Use appropriate and pleasing formal words. Formal means official words, I mean. Don't use impolite, unkind words, I mean. They should be pleasing in nature. Must please
the receiver of that invitation. The next one, no irrelevant and unclear words should be used. Never use that word, the meaning of which is not clear to you and which is not relevant according to the nature of that invitation. Avoid that. And the last point is, write in a box. Making a box around that invitation is important. Now I will give you important tips as to how an informal invitation is written. I will read out those points. Follow the format of an informal letter, that is self-address, date, salutation, body of the letter, courteous leave-taking and signature. You know, or you must be knowing the format of an informal letter. First you write self-address, date, then salutation, then body of that letter, means communication, then polite leave-taking or courteous leave-taking, and then signature. Informal invitation is written very much like that of informal letter. The next point, mention the occasion, function, venue, date, time, and any other relevant detail in running language only. Here again, you will have to mention venue, date, time, and any other relevant detail in running language only. In formal invitation, you were placing these things separately just to make that presentation beautiful. But in this case, you have to write in the manner of an informal letter. The next point is, never use any unnecessary word or words. Never use any unnecessary which is not related to that invitation. Never write. So try to avoid unnecessary word or words. And the last point is, write in a box. After you have written that invitation, you make a box around that. Dear students, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक अच्छा इनविटेशन कैसे लिखा जाता है। पहले तो आप ये समझिए कि इनविटेशन दो तरह के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज आप इनविटेशन राइटिंग के विषय में पढ़ेंगे। एक अच्छा इनविटेशन कैसे लिखा जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि दो प्रकार के इनविटेशंस होते हैं। पहला है फॉर्मल इनविटेशंस, दूसरा है इनफॉर्मल इनविटेशंस। फॉर्मल इनविटेशन को समझिए। फॉर्मल का क्या मीनिंग है? ऑफिशियल। जो इनविटेशन हम ऑफिशियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स या बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, उनको इनवाइट करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मल इनविटेशन लिखेंगे। सेकंड है इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल का मीनिंग है अनऑफिशियल। यह इनविटेशन आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को और जिनसे आप बहुत परिचित हैं, जो आपके बहुत नजदीक हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें आप इनफॉर्मल इनविटेशन भेजेंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या पॉइंट्स दूंगा कि ये दोनों प्रकार के इनविटेशंस कैसे लिखे जाते हैं। पहले,
आप फॉर्मल इनविटेशन के विषय में समझिए कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उन्हें समझिए। पहला पॉइंट है, always think over the important and relevant points or details to be included in the invitation. आप इनविटेशन की नेचर समझेंगे, किस प्रकार का इनविटेशन है वो, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके पॉइंट्स माइंड में सोचेंगे, रेलिवेंट डिटेल्स माइंड में सोचेंगे कि कौन कौन सी इंक्लूड करनी है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो आपका इनविटेशन लिखना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, डू नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ। अगर आप लिखते ही जा रहे हैं एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन, तो वो पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ कभी इनविटेशन नहीं हो सकता, बहुत गंदा लगेगा, बुरा लगेगा, कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, ईच इंपॉर्टेंट डिटेल in it should be highlighted separately. जितनी भी डिटेल्स हैं फॉर्मल इनविटेशन में, उन सबको अलग अलग हाईलाइट कीजिए। सेंटेंसेस की जो प्लेसिंग है, उसकी जो सिमेट्री है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनविटेशन वही अच्छा होगा ऑफिशियल जिसको आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इंप्रेसिवली प्रेजेंट करेंगे। जिसने रिसीव किया आपका इनविटेशन, वो आपकी प्रशंसा करे कि बहुत अच्छा इनविटेशन लिखा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। मेंशन वेन्यू, डेट, टाइम एंड द नेम ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इफ एनी। ये बहुत जरूरी है। वेन्यू, डेट, टाइम, और किसी अतिथि को आपने निमंत्रण भेजा है कि वो उस ओकेशन पर आए, तो वो नाम देना बहुत जरूरी है। ये 3-4 चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और इनको सेपरेटली हाईलाइट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा इनविटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, यूज एप्रोप्रिएट एंड प्लीजिंग फॉर्मल वर्ड्स। जो भी वर्ड्स हैं वो प्लीजिंग होने चाहिए, कोई भी इम्पोलाइट, अनकाइंड वर्ड नहीं होना चाहिए। पढ़ने में प्लीजिंग लगे वही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नो इरेलीवेंट एंड अनक्लियर वर्ड शुड बी यूज्ड। किसी वर्ड का मीनिंग याद नहीं है या क्लियर नहीं है, सुना हुआ है लेकिन मीनिंग नहीं मालूम, कभी मत यूज कीजिए। हमेशा अननेसेसरी इरेलीवेंट वर्ड को डिस्कार्ड कीजिए, इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट इन ए बॉक्स। इनविटेशन लिखने के बाद आप बॉक्स बनाएंगे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इनफॉर्मल इनविटेशन के विषय में दूंगा, उनको भी ध्यान से समझिए। Follow the format of an informal letter, that is self-addressed, date, salutation, body of the letter, courteous leave taking and signature. अब इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है इसके विषय में अच्छी तरह जानते होंगे। इनफॉर्मल लेटर में जैसे हम पहले सेल्फ एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कर्टियस लीव टेकिंग, उसके बाद सिग्नेचर। इसी तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जाएगा। क्योंकि ये इनफॉर्मल है जो आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजते हैं और जो काफी आपके नजदीक हैं। Mention the occasion, function, venue, date, time and any other relevant detail in running language only. Now, all these important details, venue, date, time or any other
relevant detail related to that occasion or function should be written in a running language only. The next point is, never use any unnecessary word or words. कोई भी unnecessary जो कि उस इन्विटेशन के लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, उस वर्ड को मत लिखिए, उस शब्दों को मत लिखिए, उनको अवॉइड कीजिए. लास्ट पॉइंट है, राइट इन ए बॉक्स, और बॉक्स में आप लिखेंगे. पहले इन्विटेशन लिख लीजिए, उसके बाद बॉक्स बना लीजिए. उम्मीद है, आशा है कि आपको ये टिप्स समझ में आ गए होंगे. और एक अच्छा इन्विटेशन, चाहे वो फॉर्मल इन्विटेशन है या इनफॉर्मल इन्विटेशन है, अच्छा लिख पाएंगे. Here is an example of a formal invitation. This will show you, this will tell you how a good formal invitation is written. Now see it carefully, attentively. On the top of that formal invitation, you will write the name of the school. You will have to write the name of the school which you get in your question paper. You will not write the name of your own school. Then you will start writing this formal invitation like this. The principal and management of the school cordially invite you on the inauguration of a swimming pool in the school premises on 24 April 2000, then you will put the year, at 11 a.m. The Honorable Education Minister, Mr. A.V. Pathania, will be the chief guest. Kindly grace the occasion with your kind presence and share some happy moments with us on this small achievement program. Welcome of the chief guest, 10:30 a.m. Inauguration, 11 a.m. RSVP, then you will put 10 crosses indicating telephone number. Now, which things you will have to keep in your mind at the time of writing a formal invitation. See here, I have written on here just to tell the occasion. Then in, this is your venue. On which date? This is the date at this time. These 4 things are very important. Name of the occasion, venue, date and time. You try to highlight them separately because these are relevant details. And at the same time, you will have to maintain the symmetry of the whole invitation. The placement of these phrases or prepositions are very important. What is the meaning of writing skills? You have to show your skills. How to write a good report, story, invitation, poster, article, letter. Your presentation should be attractive, impressive. That counts a lot. That matters a lot. Presentation should be beautiful, impressive, to look at. So you have to bear all these points in your mind. Now, I give you an example of a formal invitation. सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्कूल का नाम लिखेंगे टॉप पर, वो नाम जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में मिला है.
आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप इनविटेशन ऐसे शुरू करेंगे, द प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल cordially invite you on the inauguration of a swimming pool in the school premises on 24 April 2000 year at 11 a.m. The Honorable Education Minister, Mr. A.B. Pathania, will be the chief guest. Kindly grace the occasion with your kind presence and share some happy moments with us on this small achievement. प्रोग्राम लिखेंगे, फिर वेलकम ऑफ द चीफ गेस्ट, 10:30 a.m. इनॉग्रेशन 11 a.m. उसके बाद आप RSVP लिखेंगे, फिर 10 क्रॉस लगाएंगे, जिससे ये इंडिकेट होगा कि ये टेलीफोन नंबर है कांटेक्ट करने के लिए। आपको एक फॉर्मल इनविटेशन में लिखते हुए किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? ओकेजन, वेन्यू, डेट एंड टाइम. These 4 things are very important. Now, try to highlight these. इनको हाईलाइट आप अलग तरीके से कीजिए. ये prepositions बीच में यूज किए हैं, on, in, on, at. इससे ये हाईलाइट होगा क्या ओकेजन है, क्या फंक्शन है, कहां पर है, वेन्यू कौन सी डेट में है, किस समय है. उसके बाद फिर आप दूसरी डिटेल्स लिखेंगे. ये इसलिए जरूरी है कि आपको पूरी सिमेट्री एक आपकी होनी चाहिए फॉर्मल इनविटेशन में. प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसको आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे. स्किल्स का मीनिंग है जो भी आप राइटअप तैयार करते हैं उसको आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कीजिए, जो देखने में अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे. ये चीज यही काउंट करता है कि आपने कितना अच्छा उसको प्रेजेंट किया है. राइटिंग स्किल्स का यही मीनिंग होता है. नाउ यू विल लर्न हाउ टू राइट अ फॉर्मल एक्सेप्टेंस एंड हाउ टू राइट अ फॉर्मल रिफ्यूजल. Here is an example of a formal acceptance and a formal refusal in response to the formal invitation you have already seen. You have seen just now. I will read out the contents of both. Try to understand attentively. I will take up formal acceptance first. Mrs. and Mr. A.B. Khanna thankfully acknowledged the kind invitation extended to them by Mrs. Veena Pal, the principal of ABC School, and its management to attend the inauguration of a swimming pool on 24 April and year. They are definitely looking forward, or surely awaiting is another synonym of this definitely looking forward. You can use one of these two to attend the same and share with all the happy moments of this prideful day. They wish them all the best on this occasion. Leave one line blank, put address, leave one line blank, put date, and you will make a box. You will not take formal acceptance in the box. You will have to write this formal acceptance and formal refusal as well in third person pronoun. This is important. In the first sentence, you will acknowledge the receipt of that invitation. Now come to this formal refusal. Mrs. and Mr. A.B. Khanna thankfully acknowledged the kind invitation extended to them by Mrs. Veena Pal, the principal of ABC School, and its management
to attend the inauguration of a swimming pool on 24 April 2000 year. You notice one thing, the first sentence in both the cases, in acceptance as well as in refusal, will be the same. Because you will have to acknowledge the receipt of that invitation, that you have received that invitation. However, they feel utterly sad to express their inability to attend the same due to an already fixed appointment for the same day. They send them all their best wishes on this prideful occasion. Leave one line blank, put address, leave one line blank, date. This is the way how you will write a formal acceptance and a formal refusal. Students make one mistake. Most of the students. You will have to keep that mistake in your mind. They spell the word inauguration wrongly. They forget to take U after G. This one. So you have to take U after G to take care of this spelling. अब आप ये समझेंगे कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस और फॉर्मल रिफ्यूजल कैसे लिखते हैं. ये एक एग्जाम्पल है जो उसी इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन के विषय में लिखी गई है जो आपने इससे पहले की वीडियो क्लिप में देखा है. इसके कंटेंट्स मैं पहले ही दोहरा चुका हूं, फिर भी आई विल रिपीट these contents again for you. पहले मैं फॉर्मल एक्सेप्टेंस के विषय में बताऊंगा कि ये कैसे लिखनी चाहिए. Mrs. and Mr. A.B. Khanna thankfully acknowledged the kind invitation extended to them by Mrs. Veena Pal, the principal of ABC School and its management, to attend the inauguration of a swimming pool on 24 April year. They are definitely looking forward or surely awaiting. This is a synonym of definitely looking forward. दोनों में से आप एक यूज कर लीजिए. To attend the same and share with all the happy moments of this prideful day. They wish them all the best on this occasion. एक लाइन छोड़ेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे. अब ध्यान रखिए कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस और फॉर्मल रिफ्यूजल दोनों थर्ड पर्सन में लिखी जाती हैं. ये ध्यान रखना है. और एक और भी गलती करते हैं स्टूडेंट, इनॉग्रेशन की स्पेलिंग में वो जी के बाद जो यू आता है उसको भूल जाते हैं. ये स्पेलिंग ठीक लिखिए. अब मैं फॉर्मल रिफ्यूजल पर आता हूं. Mrs. and Mr. A.B. Khanna thankfully acknowledged the kind invitation extended to them by Mrs. Veena Pal, the principal of ABC School and its management, to attend the inauguration of a swimming pool on 24 April 2000 year. फर्स्ट सेंटेंस दोनों में सेम आएगा क्योंकि आप पहले जो इनविटेशन आपने रिसीव किया है उसको एक्नॉलेज करेंगे कि आपको वो इनविटेशन मिल गया है. दोनों में, एक्सेप्टेंस में और रिफ्यूजल में, ये सेंटेंस जरूर आएगा पहले. However, they feel, third person pronoun, they feel utterly sad to express their inability to attend the same due to an already fixed appointment for the same day. They send them all their best wishes on this prideful occasion. फिर एक लाइन छोड़िए, एड्रेस लिख दीजिए, एक लाइन छोड़िए, फिर डेट. इस तरीके से हम फॉर्मल एक्सेप्टेंस और फॉर्मल रिफ्यूजल लिखते हैं.
दोनों बॉक्स में आएंगे, फॉर्मल एक्सेप्टेंस और फॉर्मल रिफ्यूजल को बाहर रखना है, ये ध्यान रखिए। बॉक्स सिर्फ इसमें बनेगा, इसमें, इसमें और इसमें, ये बॉक्स है, इन दोनों को बाहर रखना है। इस तरीके से फॉर्मल एक्सेप्टेंस और फॉर्मल रिफ्यूजल लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you must have definitely found this video beneficial. If yes, click and share it. Comment your thoughts below. Please don't forget to hit the button subscribe. Make sure that you press the bell icon on all so that you could never miss an update.